फिर से इस लाइव स्ट्रीम पर ब्रॉट यू बाय डेफा न्यूज। चैनल का नाम है क्रिकेट विद जेमी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगर मैं आपसे कल पूछता यानी कि डे 3 के बाद कि विच टीम वुड हैव स्लेप्ट बेटर गोइंग बैक टू देयर होटल्स लास्ट नाइट, अगर आपका आंसर इंग्लैंड है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आपकी बात इंडिया है तो शायद थोड़ी बहुत हमारी बहस होगी आज के शो पे, क्योंकि कल वी न्यू द टारगेट वाज 399, about 60 odd runs had been knocked off. There was still over 300 runs to be gotten on a day 4 track in Vizag. But given that this England team, या ये हम कह सकते हैं कि ये बेसबॉल की टीम, बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की टीम अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यानी कि 150 साल से ऊपर हो चुके हैं, और ये टीम सबसे सक्सेसफुल चेसिंग टीम है। 2-2.5 साल में जो ये टीम ने हासिल किया, ये ऑलरेडी इस टीम को चेसिंग के इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पे रखती है। तो यस, like we discussed in yesterday's live stream, the odds were stacked against England, who had 9 wickets left and about 330 odd runs to get. Of course, there's Ben Stokes, who's done a couple miraculous things in his outstanding career so far. But it was day 4. There was Bumrah, there was Ashwin, there was Kuldeep. It was going to be tough. और वही हुआ दोस्तों कि आराम से चौथे दिन पर 106 रन से इंडियन टीम ने जीत हासिल कर दी। फैंटास्टिक विन, लाइक रोहित शर्मा सेड, दिस फील्स लाइक अ वेरी वेरी टफ विन। और मैं मानता हूं, और प्लीज आप भी अपनी राय यहां शेयर करिए, मैं मानता हूं कि इस बेसबॉल की टीम को घर पर पहले टेस्ट मैच हारने के बाद दिस विन must and should feel like a win overseas, an overseas test win. क्योंकि बेसबॉल ने क्या दिखाया है आपको कि सोच में, बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में ये आपको टक्कर देगी, और हो सके आपको अपने घर के कंडीशंस में आपको हरा भी दे, like we saw in Hyderabad inside 4 days. Now, India have leveled the series, like I said. A few positives, not too many, because I think very visible fault lines do remain in this team. और एक जीत, एक 100 रन की जीत से वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी फॉल्ट लाइंस अचानक गायब नहीं हो जाएंगी। पहली इनिंग्स को देखिए, यशस्वी जायसवाल, out of a total of 396, 209 came from the young 22-year-old, 23-year-old opener's bat, और ये अपने घर पे दूसरे टेस्ट मैच खेल रहे। बैटिंग प्रॉब्लम्स वर देयर इन इंडियाज फर्स्ट इनिंग्स। दूसरी बात, जसप्रीत बुमराह के 6 विकेट निकाल दो तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं बहुत आगे रन्स और भी बनाते एज कंपेयर टू व्हाट दे इवेंचुअली गॉट। सो जसप्रीत बुमराह so far one batting savior, Yashasvi Jaiswal, and second, leagues ahead of everybody else, including Ashwin, who was rather flat despite getting to 499. The leader for the bowling was Jasprit Bumrah. दूसरी पारी में again कितने 255 बना सकी टीम अच्छी बैटिंग कंडीशंस में, और शुभमन गिल की वो 100 निकाल दें, 104 जो बनाए उन्होंने, out of a total of 255, यानी कि पहली पारी में Jaiswal's 209 was over 50% of India's total, and in the second innings Shubman Gill's 100 was about 40, 42, 43% of India's total. So once again, same problems, batting problems. Rohit ki kaptani across 4 days, overall a bit defensive, a bit negative, बहुत हम बात कर चुके हैं। और फिर finally day 4 पे, yes, Kuldeep got a big wicket and Ashwin took 3, but it was once again the Jasprit Bumrah factor. इसीलिए no surprises personally कि man of the match, player of the match, Jasprit Bumrah रहे। I think it's time that we, yes, many of us have acknowledged the greatness of Jasprit Bumrah, but it's time to, if we are not doing this, it's time to acknowledge the greatness of Jasprit Bumrah in home test matches. बाहर बहुत टेस्ट मैच खेल चुके हैं बुमराह, घर पर बहुत बहुत कम। लेकिन इनका जो इस सीरीज में, यहाँ पे मैं हैदराबाद टेस्ट भी जोड़ रहा हूँ, इनका इस सीरीज में on 2 sporting wickets, the most sporting wickets we've seen in India to my mind for about 4.5 years now, the impact of Jasprit Bumrah is now reaching levels where if anyone has any doubts about his skill in India, it's time to dispel those. बुमराह को निकाल दो, जायसवाल को निकाल दो, इंडिया ये टेस्ट मैच नहीं जीत पाती। यस, हमने कल डिस्कस किया था कि 399 चेस करने बहुत बहुत मुश्किल होगा, बट व्हाट बेसबॉल डज इज इट पुट्स डाउट इन योर माइंड। तभी तो कल 100 बनाने के बाद शुभमन गिल से पूछा गया था कि इंडिया के चांसेस क्या है, उन्होंने 100 नहीं कहा, he didn't say 100%, he said 70% इंडिया, 30% टू इंग्लैंड। कब आपने सुना कि एक फॉर्म बैट्समैन ने कहा था 100 मारने के बाद, जब टारगेट 400 का था, इंडिया के पास 2 दिन थे 400 डिफेंड करने के लिए, कब एक इंडियन प्लेयर ने कहा था कि हाँ हमारे चांसेस 70% है, केवल 70%। It was a big statement and I think we saw that in the first session. Yes, 5 wickets fell, the match was pretty much turned right there, followed by the terrific run out from Shreyas Iyer, but the doubts expressed by Shubman Gill, मैं मानता हूं यही doubts कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के मन में भी होंगे। तभी तो
थोड़ी बहुत हिली हुई, थोड़ी बहुत खबराई हुई लगी रोहित शर्मा की टीम जब विकेट्स नहीं गिर रहे थे सुबह के सेशन में. बट right now, let's put aside some of our complaints, some of the very clear problems, and say salam to India for beating this baseball team by 106 runs to level the series. It sets up three fascinating test matches, my friends. In what I said at the start of this year, this is going to be the most exciting, the most exhilarating, the most absorbing test series of 2024. और so far, दो टेस्ट मैच के बेसिस पर वही हुआ है दोस्तों, है ना. चलिए अब आते हैं आपकी बातों पर. मैं समझता हूं बहुत 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 कमेंट्स ऑलरेडी इस समय पर इस चैनल पर आ चुके होंगे. लेट्स सी द फ्लड ऑफ कमेंट्स, द वॉल्यूम ऑफ कमेंट्स. भैया बहुत 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 कमेंट्स हैं. Iceberg Chauhan saying, Welcome back. Thank you. Please discuss in your live why Ashwin, Kuldeep, Akshar struggle to take. I just discussed this on two different shows earlier in the day on the Cricket Next channel. I don't think Kuldeep struggled. Kuldeep was India's best spinner in this match. He's played 5 test matches in India. India have won all 5. So Kuldeep, to my mind, did not struggle. He was India's best spinner. अक्षर पटेल बहुत बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, शायद आप नहीं जुड़ते हो ज्यादा इन लाइव स्ट्रीम्स पर इस चैनल पर. अक्षर पटेल only plays because India's top 6 is so shaky. अक्षर पटेल plays to boost India's batting as a spinner, यानी कि अपने कोर स्ट्रेंथ के बेसिस पर अक्षर पटेल ज्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेलते. He's not going to take more than 3 wickets ever in these conditions, and he's going to bowl a rather simple line. हाँ, कभी कभार अक्षर पटेल, जैसे कि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में किया था, the ball of that match to Johnny Bairstow, कभी कभार दिमाग लगाकर अक्षर पटेल ऐसी bowling करेंगे, but overall he's never going to give you the impact that Ashwin, Jadeja and Kuldeep in that order give you. In this match, he was guilty of trying to just bowl a bit too straight. और हम देख चुके हैं in the last couple of years कि जब भी conditions square turner की तरह नहीं खेलते हैं तो all of India spinners struggle to take wickets. That said, after a very rare off day earlier in the test match, I think Ashwin came back pretty well. होता क्या है कि आप जो भी हो, आप अश्विन हो जिनके पास 499 विकेट हो, या आप अक्षर पटेल हो जिनके पास स्किल कम लेकिन जिगरा ज्यादा है, when a team like baseball starts to take you on, you're going to be taken out of your comfort zone. That's why I believe we saw in this match India spinners. I won't say Kuldeep. I thought Kuldeep was very, very good. The problem was Rohit Sharma hardly gave Kuldeep Yadav bowling in this match, So I think that's another area of concern. But overall, to my mind, they struggled in this fourth innings because of the way that England came out and started to attack them. Suddenly, they were thrown off their lines. But Ashwin ke taraf, I wouldn't be too critical. I was surprised that he didn't even get as many overs as he should have. Is Indian batting just too poor? Oh, bye. I've done about 1,000 shows in the last year talking about how poor India's batting is. You can please catch up on those. Shreyansh keh rahe Rohit should be dropped. Yes, he's averaging 32 in the last 2 years at home. So, but he's not going to do that because of the stature he accommodates. You know it, I know it, my friend. But आपके जज्बात मैं समझ सकता हूँ. रोहित आप कह रहे हैं apart from Bumrah, this bowling lineup is mediocre at best. No, I'm not going to call a lineup that has Ashwin with 499 wickets mediocre. I'm not going to call a lineup that has Kuldeep Yadav, who bowled very, very well in the first innings, as mediocre. Yes, to my mind, Mukesh Kumar is mediocre. And to my mind, Akshar Patel's role as a bowler really needs to be questioned. But Bumrah, like I just said, Bumrah leagues ahead of everyone else in this match. Very, very good in the first match. But whenever Jadeja is not around in home conditions, और बात यह कि बहुत 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 ही कम बार जडेजा नहीं खेले, it does impact the way Ashwin does. Ashwin bowls so much better when he has Jadeja firing it in, varying his line and length. But yes, mediocre this attack, barring Mukesh Kumar, no, there's nothing mediocre about this bowling attack. Ashwin has 499 wickets, in case you missed that key stat. Ashutosh Kere, Ishan is right there if you don't want to give cap. I don't think Ishan Kishan is playing for some time, from what I'm hearing. Jurel should definitely play the next test. Did well in West Indies because he's being crucified because team like to play favorites. No, not crucified. Something apparently happened off the field in South Africa, as well as when he asked for leave, and then I believe at his brother's wedding or his brother's some birthday party in Dubai, he was seen partying. So something that I'm hearing from people, it's not about being crucified. Something about his attitude is in question. But again, I don't have 100% evidence, so I'm not going to go there. But
Ishan Kishan, I don't think will play for some time. First time since BGD 2017, we are facing challenge at home. Exactly, because now you've gone back to playing sporting wickets. Until 2017-18, you were playing 2019, in fact, you were playing sporting wickets. But then you went back to these rank turners where 90% of the time your bowlers did the job. So it's good. I'm saying this is a great time for India to be challenged. But the good thing is playing on these sporting wickets, finally, some batsmen are getting hundreds and some are getting double hundreds. On rank turners, no one's ever going to get a double hundred. I think Rohit Sharma has one of the, is he the only centurion in the last 4 years on these rank turners? So I'm all for. I think this was a great test wicket. India won a test match in 4 days. Spinners got some wickets. Bumrah got 9 wickets. Jaiswal got a double century. When was the last time you saw any batsman even stand a chance of getting a 200? So I hope we take a break from rank turners. Just like Hyderabad, I thought Hyderabad wicket was fantastic. I thought this wicket was fantastic. Let's play on these wickets because it also brings the opposition into the game. India need to be challenged. The last 4 years of the WTC, saw India predominantly, more or less, play on turners and to get the points in order to get to the final. लेकिन final पे चाहे वो Southampton हो 2021 में या ओवल हो लास्ट ईयर, वो टर्निंग ट्रैक्स नहीं थे, तो आपकी टाइम टाइम फेस हो गई. My gut feeling is the more you play on these kind of wickets, the Hyderabad wickets and the Vizag wickets, the more your chances of winning a WTC final, should you get there, will increase. सर वी गिफ्टेड फर्स्ट टेस्ट टू इंग्लैंड अदरवाइज 2-0. हाँ बिल्कुल, हमने ये पूरा डिस्कस किया था फर्स्ट टेस्ट के बाद. मुकेश को ड्रॉप करो. मैं कह रहा हूं मुकेश कुमार है ही क्यों इस स्क्वाड में. मुकेश कुमार की बात नहीं है, इतिहास बताती है कि पिछले 2 साल में जो भी पेसर आपने खिलाया, मैच के विजिटिंग टीम के दूसरे इनिंग्स में, यानी कि मैच के तीसरे या चौथे इनिंग्स में पेसर्स ओवर्स डालते ही नहीं है. तो बात सिर्फ मुकेश की नहीं है, आपको दूसरा पेसर की जरूरत नहीं है इन पिचेस पर. सिर्फ और सिर्फ बुमराह को खिलाओ. यदि आपको थोड़ी फिक्र है कि 5 टेस्ट मैच के लिए बुमराह अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाएंगे, तो आप किसी और को बुलाओ. लेकिन सिराज और मुकेश से नहीं होगा इन कंडीशंस में, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू बॉलिंग इन द सेकंड innings. Bumrah and Anderson bowl show they don't need seaming conditions. Bilkul, I mean, you're talking about the greatest fast bowler ever in Anderson at 41, and to my mind, the greatest Indian fast bowler, Bumrah, doing things. Jasprit Bumrah has gone past 150 wickets. He's got the second best bowling average in a sport which has been played for 150 odd years. This is the greatest Indian fast bowler we're watching. And on the other hand, the greatest fast bowler ever, James Anderson. Sir, why are India persisting with Iyer and Mukesh? Akshat, we've discussed this every single day of this whole series. Shreyas Iyer is averaging 17 from his last 12 test innings. I don't understand why they're going. And I've been saying this in South Africa. Even when Mukesh was doing things in that second test, that 2-day test match in South Africa, I said, do not play this guy. This was a month ago. I said, do not play Mukesh Kumar in home test matches. He's not going to work. और एक टेस्ट मैच में मुकेश कुमार ने पहली पारी में पहले 2 ओवर में 22 रन दिए, और इस इनिंग्स में यानी कि चौथे इनिंग्स में अपने पहले 2 ओवर में 19 रन दिए. तो जो बात मैंने आपसे इस चैनल पर 1 महीने कहा था, ये बीसीसीआई वाले, ये द्रविड़ और रोहित, वो क्यों नहीं समझ पाए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए. Crick Maniac, because that's how they've been brought up since junior level to not. Achha, you're applying to someone. Okay, fine. I'm not wrong. Will India be underdogs for coming matches? Yes, Soitab. Yes. When you're playing baseball, you will be the underdog until you wrap it up. I think it's going to be 3-2, like I predicted before this series, if baseball doesn't work. So, do you feel there's a dip in quality of Akshar's bowling as compared? Definitely. Because the last time England were here 3 years ago, after they rolled out a very surprisingly flat track for Chennai, and Joe Root got a double hundred and they screwed you, for the next 3 matches, we saw square turners. Yes, Akshay Patel took 21 wickets in his first 3 test matches. Brilliant start. Maybe one of the greatest starts by an Indian spinner to test cricket. But those were square turners. Remove the square turners, and Akshay looks like a very, very average bowler. Yes, he offers value. He does. He's capable of producing. Like I said, the ball of the first test match in Hyderabad was the ball that he bowled to Johnny Bairstow. लेकिन जब उनकी bowling average बढ़ती जा रही है, strike rate बढ़ता जा रहा है,
और वो केवल रन्स की बेसिस पर खेल रहे हैं. कुलदीप यादव came and took what, 4 wickets, 5 wickets in this match. That's more than Akshar has gotten in the last couple matches. So Kuldeep should be playing a lot more matches in these conditions. Akshar should not be playing matches, but Akshar plays because he's in the all-rounder category, and also because India's batting has been the top six, I would say, has been so weak over the last 3 years that Akshar comes in and bats at number 9 and offers so much value. But that said, अगर वो all-rounder के टैग के साथ सिर्फ एक डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इनका योगदान क्या है आगे जाकर. Amandeep saying, I am also making a big statement. आपका comment उड़ गया दो, sorry. Why India not picking maybe more potent all-rounders like Dubey? Dubey is not a quality all-rounder. We saw that. Good batsman, but his bowling, like we saw recently, it's not good enough for Test cricket. Jayant Yadav, again, you don't need another, माफी चाहूंगा, another very basic off spinner. जब तक I would play Ashwin, Jadeja and Kuldeep in every single test match. Yes, मैं मानता हूं कि कुलदीप की बैटिंग उस मकाम तक नहीं है, but he's always going to offer you much more as a bowler than Akshar will and Jayant Yadav. अगर जयंत यादव खेलते भी हैं, देखो, जो भी आपका तीसरा स्पिनर है अश्विन और जडेजा के बाद, वो एक टेस्ट मैच में स्पिनर्स में से वो सबसे कम ओवर फेंकेंगे. You play Washington Sundar, he is going to offer value with the bat. Jayant Yadav's got a test 100 from number 8, and I believe in his last test match 2 years ago, he got 4 wickets. But when you're when you're Jayant Yadav, when you're Akshar Patel, when you're Washington Sundar, you're going to do a lot more batting than you are bowling, simply because the captain will have much more faith in Ashwin and Jadeja. तो रही बात ऑलराउंडर्स की, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जड्डू और अश्विन ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत बहुत बड़े ऑलराउंडर है. I wanted to see Washington Sundar play this test match in Vizag, but I said it on this channel. अगर वो खेलेंगे, वो आपकी बैटिंग को डेप्थ देंगे. अश्विन है, जडेजा है, चलो इस मैच में नहीं थे जडेजा, लेकिन जब वो दोनों आएंगे, एक दिन में वॉशिंगटन सुंदर कितने ओवर फेंकेंगे? 5 मुश्किल से. सो इट्स, आई गेट योर पॉइंट. इट्स नॉट अबाउट जयंत अक्षर जब तक अश्विन और जडेजा इस टीम में है. हाँ, जब दोनों रिटायर होंगे अगले 2-2.5 साल में, फिर आप जयंत को खिलाइए, फिर आप दुबे को खिलाइए, फिर आप अक्षर को खिलाइए, फिर आप सुंदर को खिलाइए. Ashutosh saying Mukesh can't hit hard death and bowl lethal short balls. My friend, he's bowling about 135. He cannot be lethal here. Fielding is a big difference. Last match we dropped catches. This match we did well. Yes, Shubman Gill dropped a catch in the first innings, but he made up with 4 wickets. Shreyas Iyer took a fantastic catch, and then he got the biggest wicket of the match, the run out to get Ben Stokes. Definitely. Sundar and Paisa Mukesh, I've been saying this for a long time. You don't need Batsra Mukesh ki nahi. I said before the first test match, you don't need Siraj. I said before the second test match, you don't need Siraj. I said you need to play another batsman who can bowl, because the batting is the problem, not the bowling. Shubhajit, Bumrah might just end up with 250 or 300 test wickets. We should, but there's no doubt in my mind that he's the finest pure fast bowler for India. Bilkul, I agree with you. Will Sarfaraz be picked for the playing 11 in place of Iyer? No, because if Kohli and KL Rahul come back, 2 batsmen are anyways going to be dropped, the ones who played. So Sarfaraz remains exactly where he was even before he was recalled to this squad, way behind. Third test playing 11, Rohit, Jaiswal, Gill, Rahul. I'm hearing that Rahul might not come back. The injury is apparently a bit more serious. Absolutely no word on Virat Kohli. I've been trying to get some update, but everyone is being very mum, very quiet about Kohli. Let's hope that Kohli comes back. Jadeja, I think, should come back. But anyways, you are saying Rohit, Jaiswal, Gill, Rahul, Iyer, Akshar, Bharat, Ashwin. You're playing Bharat still. 7 test matches, average of 20. For me, Dhruv Jurel plays the next match. Bumrah, Siraj. It's Ranchi. Ranchi is known to be a batting wicket, so you might need a second pacer, but I would still, I would drop Mukesh and I would bring in Washington Sundar. That's my 11. Ashutosh saying my 11: Rohit, Jaiswal, Gill, Virat, if not available, Rajat, KL, if not available, either Achar Sarfaraz, Jurel, Akshar, Ashwin, Kuldeep, Bumrah, Raj. Second pacer if someone slips on peel. Sahi baat hai, but that second pacer is not going to bowl more than 12 overs in a test match. To my mind, redundant. But anyways, take it.
श्रेयस पूछ रहे सर, डू यू थिंक श्रेयस अय्यर गेट एनी चांस? अभी तो मैंने बात किया, जब तक केएल राहुल और विराट कोहली नहीं आएंगे वापस, श्रेयस अय्यर हर मैच खेलेंगे. Think Dravid being conservative always has been as a batsman. My favorite batsman, by all means. I've said that. But a conservative batsman, but it worked with his batting because his batting was brilliant for those 15 odd years. Very conservative captain and a very, very conservative coach. इसमें कोई नई बात नहीं है. जायसवाल इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. बिल्कुल, मैंने साल की शुरुआत में कहा था कि ये लड़का 12 से 15 साल खेलेगा देश के लिए. Travis Head also groomed, correct. Return of Umesh Yadav for the third test. Anything is possible with this team, but I believe they move beyond Umesh Yadav. But nothing personal against Umesh Yadav. I think he's very good for home conditions. Amandeep कह रहे I am also making a big statement. Batting problems will sink India in a series. बिल्कुल बात स्टेटमेंट बड़ी है, लेकिन ये तो मैं पिछले साल से कह रहा हूं कि अगर इंडिया टेस्ट मैच जीतना चाहती है घर पर, अगर अपना घर का रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है, तो बैटिंग में बदलाव लाने पड़ेंगे. तो आपकी बात सही है, लेकिन आप जो कह रहे हो कोई कोई नई बात नहीं है. अगर इंडिया ये सीरीज हारेगी, ये मैंने सीरीज से पहले भी कहा था, इट विल बी बिकॉज देयर बैट्समैन वोंट बी एबल टू कोप विद हार्टली, लीच, बशीर एंड रेहान. और अब तक 4 पारी की बेसिस पर बिल्कुल सही मेरा प्रेडिक्शन था. Do you know any other all-rounder playing in Ranji circuits who can come to the national side? No. We've discussed this many, many times. ऐसा कोई all-rounder है ही नहीं है. Why not Shardul in place of Mukesh? Batting depth. Not really offering much na these days. काफी खराब form है शार्दुल का. Shardul doesn't play well against spin. That's also a fact. Deepak, मजने कहा था, मजने मजने अच्छा, मैंने कहा था ना कि बेसबॉल को यही दफन करेंगे. टीम इंडिया थ्रू द बेसबॉल आउट इन वाइजैग. हाँ, जीत तो गई, लेकिन बेसबॉल को कहीं फेंका नहीं है. जैसे कि मैंने अभी एक दोपहर के शो में कहा था, रोहित शर्मा खुद इन्होंने माना है कि बेसबॉल से बड़ी चैलेंज उनको नहीं मिला है. तो आपको लगता है एक एक जीत के बेसिस पर कि बेसबॉल खत्म हो चुका है, तो ये आपकी व्यू है, लेकिन ये गलतफहमी मत पालना. ये सीरीज इंडिया जीत सकती है, लेकिन बेसबॉल कहीं गया नहीं है. बेसबॉल का सिंपल फंडा ये है कि हम कुछ भी टारगेट पार कर लेंगे, और अगर हम एक मैच हार भी गए तो हमें घंटा फर्क पड़ता है. तो आप प्लीज दीपक भाई, आप ये गलतफहमी मत पालिए कि बेसबॉल खत्म हो चुका है, बेसबॉल गया है. बेसबॉल कहीं नहीं जाने वाला है. और जैसे कि मैंने पिछले महीने कहा था, ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ बेसबॉल के बेसिस पर और इंडिया की खराब बैटिंग के बेसिस पर इस साल का सबसे मस्त टेस्ट सीरीज रहने वाला है. बेसबॉल कहीं नहीं गया है. इंडिया केवल 100 रन से जीती है. बैटिंग बहुत 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 खराब थी. बॉलिंग बुमराह को छोड़कर और कुलदीप को एक दिन में छोड़कर बहुत बहुत खराब थी. कप्तानी रोहित की बहुत बहुत खराब रही, और ये सिर्फ बेसबॉल के कारण. तो भाई दोस्त मेरे, बेसबॉल कहीं नहीं गया है. Sir, to answer BCCI, Rahul, Rohit are politicized and therefore incompetent. I won't choose to comment on these things. We need a revamp of how we find talent and metrics for performances, especially in crunch matches. बिल्कुल, ये तो हमने बहुत डिस्कस किया. India won't drop Bharat anyways. Unlikely, yes. It's not Ranchi, it's Rajkot. हाँ, sorry, Rajkot, Dharamshala, and then Ranchi. हाँ, what I meant was Rajkot is a total batting wicket. It's one of the flattest, one of the dullest wickets in India. हाँ, that's what I meant. So राजकोट में हाँ आपको, क्योंकि बुमराह को बहुत 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 ओवर फेंकने पड़ेंगे राजकोट में. रांची also is also a very good batting wicket, but I still don't think India will need a second pacer on these two flat tracks. धर्मशाला की बात तो कुछ और है. श्रेयस इज अ वेस्ट, but again they won't drop him. हाँ, मैंने अभी मैच के बाद एक शो पे था मैं टीवी चैनल पर, और मैंने कहा था कि उस रनआउट की बेसिस पर श्रेयस अय्यर अगला मैच खेलेंगे. सर, रिपोर्ट आर कमिंग इन केएल विल बी फिट. हो सके, देयर इज अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स गोइंग अराउंड. आई हैव हर्ड दैट द इंजरी इज अ बिट मोर सीरियस देन एंटिसिपेटेड. सो बट अगेन देयर इज 9 डेज नाउ. 8 दिन तो पहले थे, और क्योंकि मैच 4 दिन में खत्म हो गया, तो अभी 9 दिन है. लेट्स होप कि राहुल, विराट, शामी एंड जडेजा ऑल कम बैक सून. बट मुश्किल है कि शामी आएंगे. If we had seamer all-rounders like Green, Mitch Marsh, Colin de Grandhomme, or Daryl Mitchell, who could just give 10 over the day, we can bolster our batting and no second base. Agreed, but nahi hai. Prerak Mankad, he's been doing a lot of good things on the domestic circuit, but if he's not been doing things for India A, I don't see him coming in here. Introspect. Hello, Jamie.
What are your views on crowd turnout in test matches? Very, very good. Both venues had students coming in for free, and 7, 8,000 students do add to it. But overall, pretty good numbers. I'm very, very impressed. Rajkot, I don't think so. Ranchi, I expect, and Dharamshala, I expect. Yes. When will the Bharat will get dropped from the team as he's always been a failure? पता नहीं यार. I really pray for पंत. बिल्कुल मैं तो एक साल से दुआ मांग रहा हूँ कि भाई मेरे फेवरेट क्रिकेटर इस जमाने के वो जल्दी वापस आ जाए. रजत पाटीदार को चांस मिलेगा थर्ड टेस्ट. मैं चाहूंगा कि ऐसा हो, लेकिन अगर जो केएल राहुल और विराट कोहली वापस आएंगे तो दो बैट्समैन को जाना पड़ेगा. गिल ने तो 100 मार दिया, तो अगर दो खिलाड़ी अंदर आएंगे, दो को बाहर जाना पड़ेगा. श्रेयस अय्यर से रन तो बन नहीं रहे, तो वो जाएंगे. और पाटीदार ने कुछ बड़ा तो नहीं किया डेब्यू पे. तो ये मैंने कहा था, इस मैच से पहले मैंने कहा था कि जब तीसरे मैच के लिए कोहली और राहुल आएंगे, तो इन तीन में से यानी कि गिल, अय्यर और पाटीदार में से एक को बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा. और दो तो फेल हो गए. बड़ा स्कोर आया सिर्फ गिल से, तो गिल तो खेलेंगे, यानी कि श्रेयस बाहर और पाटीदार बाहर. Umesh should return, a very good hit attack bowler and bowls 135 consistently. I agree. And his recent form has not been bad, but I think the selectors have moved past him. My gut feeling. Wouldn't be surprised if they bring in Unatkat. Wouldn't surprise me either. Home ground and scored good runs in the last Ranji match. It's a possibility. बेसबॉल इज नॉट ओवर ये जेमी. बिल्कुल मैं तो वही कह रहा हूं. आप ही ने बोला कि बेसबॉल को बाहर फेंक दिया. पर इंग्लैंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट बाय गिविंग स्टेटमेंट दे विल चेस डाउन. यही बात दोस्त, यही तो मैं कल एक और शो पे कह रहा था और आज सुबह भी. आप लोग इनकी बातों में मत फंसिए. इनके स्टेटमेंट्स सिर्फ बहकाने के लिए हैं. इस टीम की बिलीफ है, अगर 150 साल में बेसबॉल की टीम चेसिंग करने वाली सबसे सफल टीम है, और आप स्टैट्स देख सकते हैं, तो इसके पीछे एक कारण है. और कारण ये है कि ये मानते हैं कि हम कुछ भी चेस कर पाएंगे. 2 साल पहले इंडिया ने इनको 380 का टारगेट दिया था. जो रूट ने 100 मारा, आई थिंक बैट्सो वैसे ने 100 मारा. तो इनको बोलने दो. प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इनकी बातों में मत आओ. इनको बोलने दो. इनको एक दो हार से घंटा फर्क पड़ता है, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस उनकी बातों में है, उस कॉन्फिडेंस के पीछे एक जेन्युइन बिलीफ है कि हम चेस करेंगे. आप उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहिए, आपको लगता है, लेकिन इसी टीम ने इंडिया को 190 की लीड थी. इंडिया के पास हैदराबाद में 190 रन की लीड में. इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कभी भी घर पर 190 रन की लीड से कोई टीम हारी नहीं थी. बेसबॉल ने क्या किया? बेसबॉल ने इंडिया को थप्पड़ मारा और 190 रन की लीड को 230 का लीड खुद दे दिया. तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना बेसबॉल. अब ये कहेंगे, ये कहते हैं क्योंकि लोग को थोड़ा चकमा देने के लिए. अच्छा ये ऐसा है, पॉइंट है. इनको घंटा फर्क पड़ता है, बेसबॉल वालों को घंटा फर्क पड़ता है कि ये मैच हारे. क्योंकि जब से बेसबॉल शुरू हुआ था 2-2.5 साल पहले, ये तब से कहते आ रहे हैं कि हमें एक दो मैच हारना पड़े तो हमें कोई फर्क नहीं. और फिर उनकी मीडिया ने कहा था, जेफरी बॉयकॉट, माइकल वॉन, अरे ये कैसे बोल दिया कि हम हार सकते हैं? क्योंकि टेस्ट के इतिहास में बेसबॉल जैसी चीज आज तक आई नहीं. और बेसबॉल से पहले ऑन द रिकॉर्ड किसी भी देश के टेस्ट कप्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हमें एक दो मैच हारने से फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन बेन स्टोक्स ने ये बोला, ब्रेंडन मैकलम ने ये बोला, क्योंकि ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि हम कुछ भी लक्ष्य पार कर सकते हैं. इनको बोले दो. लेकिन जिस बेसबॉल का स्ट्राइक रेट 80% का हो, कितने 20 टेस्ट मैचेस में, उसको सलाम तो ठोकना पड़ेगा बॉस. Baseball term is a bit overrated. I agree. They just attack to overcome their weakness. Again, AJ, you made the common wrong assumption, wrong conclusion of what baseball is. I agree. The term is very irritating. I hate the term, but I love the philosophy. I love the approach, and I love the entertainment that baseball is bringing. Baseball, let me clear this out. ये बहुत कह चुका हूं. Baseball is not just about scoring at 4.5 runs and over. It's not just about batting. Baseball एक सोच है, एक फिलॉसफी है कि हम कभी नहीं हार सकते. पर अगर हार गए, कोई बात नहीं. अगला मैच जीतेंगे, दूसरा मैच जीतेंगे, हारेंगे, हम डिक्लेयर कर लेंगे,
हम 1 रन से हारेंगे। जेम्स एंडरसन ने बेसबॉल की शुरुआत में कही थी 2-2.5 साल पहले कि अगर मैं नंबर 11 पे बैटिंग करने आया हूं और टारगेट 20 का है, मैं टुक टुक नहीं करूंगा, मैं छक्का मारूंगा। हार गए, कोई बात नहीं। ये बेसबॉल है। बेसबॉल एक फील्डिंग में सोच है कि बेन स्टोक्स हट के फील्ड लगाए, बेन स्टोक्स गजब कैच ले। आपको याद है पाकिस्तान के सामने या न्यूजीलैंड के सामने बेन स्टोक्स ने सारे फील्डर आधे यहां लगाए सर्कल पे, आधे यहां लगाए। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास जैसे T20 ओपनर को पाकिस्तान जाकर पाटा विकेट पर एक स्पिनर के तौर पे खिलाएंगे। क्या किया विल जैक्स ने 5 विकेट लिए पहले टेस्ट सीरीज में। उसी सीरीज में उन्होंने कहा था हम रेहान अहमद जैसे 21-22 साल के लड़के को टेस्ट डेब्यू देंगे। रेहान अहमद ने क्या किया? 5 विकेट लिए। इस सीरीज में पहले टेस्ट मैच में इन्होंने टॉम हार्टली को खिलाया। टॉम हार्टली के पास 19-20 मैच थे इससे पहले। टॉम हार्टली का पहला गेंद टेस्ट मैच में छक्का गया। बेन स्टोक्स ने कहा कोई बात नहीं, तू डालते रहे। क्या किया टॉम हार्टली ने? 7 विकेट लिए चौथे दिन पर और इंडिया की बम्बू। ये है बेसबॉल। हम हार नहीं मानते, हम आगे बढ़ेंगे। हम बाकी में हम 400 चेस करेंगे 70 ओवर में। करना मुश्किल है लेकिन एक बिलीफ जो है। और जब जब 15 टेस्ट जब 19-20 टेस्ट मैचेस में से बेसबॉल के आप 15 जीत चुके हो, आपका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है और जो बदलाव, जो एंटरटेनमेंट आप विश्व के फैंस को दे रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो यस, द बेसबॉल टर्म इज ओवररेटेड, बट एजे, baseball is much more than just attacking the ball. It's a philosophy, it's a coaching approach, it's a selection approach, it's a batting approach, it's a bowling approach, and it's a fielding approach. I hope I'm making sense. Shikhar saying brilliant test series so far, the best side to tour India since their last winning squad in India. Bilkul, I'm saying this is the best side to come to India since 2012 for any team. I said before this series on this channel कि अगर बेसबॉल चल गया तो इंडिया जीतेगी लेकिन 2 टेस्ट मैच हारेगी। अगर फेल हुआ तो इंडिया 5-0 जीतेगी। मैंने कहा था कि ये सीरीज 2.5 साल के बेसबॉल के इतिहास में सबसे बड़ा सीरीज है। इस इंग्लैंड टीम में बहुत बहुत ऑब्वियस कमियां हैं, लेकिन इस सबको जोड़ के रिजल्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये सीरीज इस साल का यानी कि 2024 का सबसे एंटरटेनिंग सीरीज हो रहा है। और आप खुद बताइए कितने साल के बाद आपको 2 टेस्ट मैच में अलग रिजल्ट्स के साथ अलग परफॉर्मेंसेस देखने को मिले और अलग मनोरंजन मिला। आप बताइए। Rajkot is going to be okay. Your comment is vanished. Sorry. Okay, too many comments. I'm gonna go backwards now. Indian team needs a better man in management. बिल्कुल कब से कह रहा हूं मैं. Bring back Shastri. Sports fan impressive with Zach Crowley. This England management stuck with him even when he was a walking wicket for a long time. Exactly. That is baseball. What did I say? Baseball is also selection. अरे श्रेयस का बताओ. बता दिया मैंने ऑलरेडी श्रेयस का. Rajkot is batting suited pitch, playing extra batsman, then second fast bowler will help India. I'm saying bolster the batting. You don't need a second pacer. Bumrah काम कर देगा. AJ कह रहा है बात तो सही है. हम अक्सर सही बात कहते हैं दोस्त. Don't you think Sarfaraz should have been given a chance in place of Pattar? I answered the same question when one of you asked me this before the test match. I said इस सवाल का जवाब पाटीदार वर्सेस सरफराज का जवाब उस पे डिपेंड है कि बंदे को खिलाएंगे कहां। यदि आपको नंबर 3 या 4 पे किसी को खिलाना है तो वो पाटीदार है। अगर आपको नंबर 5 पे खिलाना है तो वो सरफराज है, बिकॉज दोनों उसी पोजीशन पे खेलते हैं। अफसोस की बात है कि इंडिया ने पाटीदार को डेब्यू तो दिया, अच्छी बात है, मगर उनको गलत जगह पे खिलाया। पाटीदार को 4 पे खिलाना चाहिए था और अय्यर को 5 पे। एंड आई एम श्योर कहीं ना कहीं पाटीदार का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया। Correct me if I'm wrong, but didn't Virat once said it's better to go for a win and lose rather than go for a draw? I think he said it, and I think we saw this. We saw this in the very first Test match that Virat Kohli captained in 2014 when Dhoni retired out of the blue in the middle of a Test series. That Adelaide Test match was Virat Kohli's first Test match as captain. He got 200s in the same match. India were chasing a stuffed target. They were getting close and every single batsman started to play shots. I think that's when he said, बात सही है, लेकिन कहना और एक बार कहना और बेसबॉल जैसे मेंटालिटी को 20 टेस्ट मैच तक जिंदा रखना, उसमें बहुत फर्क है दोस्त. Virat Kohli next test match, like I said earlier, I've been asking, but no one's actually giving an answer, but I think so, yes.
If England bats first, then it'll be more tough for India to win. बिल्कुल अगले 3 टेस्ट में भाई टॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहना होगा. इंग्लैंड थोड़ा सेंसिबल खेलता तो चेस खेलता. बिल्कुल, I was telling someone also, had Joe Root not gotten out that way, this match could have ended today in England's favor. But again, that is what baseball is, कि हम बस शॉट मारते रहेंगे. It's one very vital part about baseball. And they said this, यार हम एक मैच हारे हैं. जसप्रीत बुमराह ने हमारी गिल्लियां कर दी. Hats off to Bumrah. Believe me, this England team is not worried. They genuinely believe they can win this series 4-1. Can we call Bumrah a great test bowler, or should we wait for him to play more test matches? I just said 35 minutes ago, he's already India's greatest test bowler, to my mind. He's got the second best test average in the history of a sport that goes back over 150 years. He's already India's greatest fast bowler. अश्विन हार्टली से हु क्यों डर रहा था? क्योंकि हार्टली ने जिगरा दिखाया. हार्टली ने वो किया जो अब बहुत बहुत साल से कोई भी विदेशी ओपनर यहां आकर नहीं कर सका. अश्विन को अटैक. और जब अश्विन को अटैक करते हो, हाँ, आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन हार्टली ने जो जिगरा दिखाया ना, अश्विन थोड़ी बहुत उनकी हिल गई आज. Bumrah has been absolutely flawless since return. He's been brilliant. Look at him in South Africa. Look at him in Hyderabad. Look at him in Vizag. What a spell! Might be the best pace bowling performance I've ever seen in India. It's up there. It's up there. It's up there, my friend. This is and not just here. Even in Hyderabad, he was very good. Yeah, this was an outstanding 9 wicket haul. Fully deserved the man of the match, if you ask me. Akshat, sir, can you answer my last question? पूछो पूछो पूछो. मुझे आर्टिकल भी लिखना है, तो मुझे शो बंद करना पड़ेगा. पूछो अक्षत, लास्ट सवाल पूछो. अक्षर बॉल बाहर क्यों नहीं निकाल रहा था? इनकी जैसे पिच नहीं थी. He will struggle on these tracks. Akshat, what's the last question? Why Bumrah shakes his shoulder after comeback in bowling now? Don't know, yaar. You should tweet to him and ask him. Rajkot is going to be oven. It'll be a risk for getting just one fast bowler. It is a risk, but you need to take risk to beat this baseball team. In the last 2 years, not just about this match, in the last 2 years, whatever second pacer India has played has hardly bowled. In the Border Gavaskar Trophy, in 3 test matches, Australia batted twice. In all the 3 test matches that Mohammad Siraj played, in 3 test matches, in 3 second innings, Bumrah bowled one, Siraj bowled one over. You don't need a second pacer, whatever the conditions. Even on a flat track, I would rather have another spinner who can bats. Yes, you're right, Jamie, but it's also the Indian team who can beat the Baz bowlers out. Anyone. The beauty of Baz ball is it gives the other team an even greater chance of winning. क्योंकि Baz ball के थ्रू ये लोग विकेट्स देंगे. आज क्या हुआ? आज इंग्लैंड के बैट्समैन ने बहुत विकेट्स दिए भी. तो Baz ball gives the other team a great chance of winning. लेकिन what it does is it puts doubts in the captain's mind, just like we saw in the Hyderabad test. Rohit Sharma was clueless with the captaincy. और इस मैच में also, he's also clueless. भाई आपको लगता है कि इंडियन टीम मैन वुमेन गेम अवेयरनेस की कमी है? बहुत बहुत कमी है. इसमें नई बात नहीं है. सर, सिंस मोस्ट कंट्रीज क्रिकेटिंग सर्किट इज फंडेड एंड प्राइवेटाइज्ड बाय इंडियन क्रिकेट फॉलोइंग और एनी अदर कंट्री मोर मोटिवेटेड टू परफॉर्म देन इंडियन नेशनल क्रिकेट? मे बी, बट आई डोंट थिंक आप उस एलीट स्पोर्ट के लेवल पर आप ऐसे सोचते होंगे. आई डोंट थिंक सो. I'd be very surprised. Anyways, friends, thank you. Lovely discussing with you. Got to go and write an article, my match review, and record a video for tomorrow. Thanks for joining. Great questions. It's 1-1 to India. Love you all. Take care. Jai Hind.